Morning, dear students. I think you might be in the best of health. Dear students, we are doing the lesson The Soil. In this lesson, we had seen the composition of soil. You had seen the importance of soil. You had seen how did the soils form. You had also seen the soil profile, the three layers. Do you remember now? Topsoil, subsoil, and the bedrock. Right? Then you had also seen the soil erosion, the causes of soil erosion. Now, but today we people are going to check out how can we conserve our soil. Means soil conservation, saving our soil, getting a topsoil from getting depleted, from getting carried away. So there are many steps that we can follow. Let's go into the greater detail. Now, dear students, you know it very well that soil is a valuable natural resource, and once it gets depleted, it takes millions of years to replenish. आप लोगों को पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और अगर हमारी अर्थ डिप्लीट हो जाती है बच्चे, आपको पता ही है टॉप सॉइल को बनने में कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है. तो इसीलिए इसकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में, अगेन इफ वी वांट अ टॉप सॉइल टू बी देयर, तो उसको हमें मेंटेन करने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. इज दैट क्लियर? राइट? तो व्हाट कैन हैपन? देयर कैन बी द लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन द सॉइल. ड्यू टू दिस लॉस ऑफ फर्टिलिटी, आप लोगों को पता है द सॉइल क्रॉप्स वुड बी अनहेल्दी. इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, and automatically it can lead to the financial losses to the farmers. Automatically what is going to happen कि farmers को financial losses होना शुरू हो जाएगा. उनको business, मतलब देखो, crop growing is a business of a farmer. Is that clear? वो खुद के लिए भी अपना क्रॉप रखता है और मार्केट में सेल के लिए भी. लेकिन अगर फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, तो वो मार्केट में जाकर अपना ज़्यादा क्रॉप सेल भी नहीं कर सकेगा. इज दैट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू लीड टू व्हाट? फाइनेंशियल लॉस इन एन इकोनॉमी. राइट? Since it is difficult to replenish the soil, we must protect it from soil erosion. So बच्चे, what is really important? आप लोगों के लिए ये रिप्लेनिश करना सॉइल तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे को तो बस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रखना है. और अगर आपको फर्टिलिटी को मेंटेन कर रखना है तो यू हैव टू सेव योर सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड. हमारे को सॉइल इरोजन से बचाना है, और सॉइल इरोजन से जब हम बचाएंगे, वी वुड बी फॉलोइंग दीज स्टेप्स which would actually help in the conservation of soil. What is it going to help out? It is going to help you in the conservation. And when you are conserving your soil, bache, it aims at preventing or at least minimizing the soil loss. क्या करता है कि हम लोग अपने soil loss को prevent करते हैं, minimize करते हैं. Could you people do like to preserve your soil? Yes, you can plant more trees, you can check the overgrazing, you can construct the embankments, you can change your agricultural practices, and there are many other methods which can help us to conserve your soil. So let's get ready to read all these methods. See, these are all the methods of soil conservation. When I check out all these methods, bache, you should be remembering that some of the methods like this. It is particularly what? This is a terrace forming, right? This is particularly the embankments. This is saving from the winds. So dear students, let's see what all systems we could follow to reduce the soil loss. We can follow the strip cropping. We can follow the terrace forming in the hills. We can follow no-till planting. We can follow the cover crops, मतलब the cropping pattern all the year round. We can follow the counter cropping, and finally we can even follow the windbreaks. But there are many more methods that we can follow. Let's start studying all these methods in detail. Now bache, let's see planting more trees. Yes, this is a really important method. Afforestation, opposite of deforestation. Deforestation where we are cutting the trees. Afforestation means हम लोग उन एरियाज पे प्लांट्स लगाते हैं जहाँ पे बहुत एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है. दिस मीन्स ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर ऑफ द ट्रीज हेयर. सो बच्चे, रूट्स ऑफ प्लांट्स
and the trees prevent water and wind from blowing away the soil and therefore lessen the soil erosion. आपको पता है ना, रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट कर लेती हैं सॉइल को. दे अपहोल्ड द सॉइल. इज दैट क्लियर? सो दे प्रिवेंट द वाटर एंड विंड, मतलब ये स्टॉप करती हैं वाटर और विंड को फ्रॉम गेटिंग द सॉइल, taking the soil away. Is that clear? So planting more trees is an effective way of reducing the soil erosion. अगर आप और ज़्यादा trees और plants को यहाँ पर plant करते हो तो automatically वहाँ पर soil erosion कम होगा. बच्चे, afforestation is beneficial both in plants and in the plains and in the hilly areas. So afforestation, that is opposite of deforestation, is basically beneficial not only in the plains बच्चे but also in the case of the hilly areas. Is that clear? So hilly areas भी जितने ज़्यादा green रहेंगे उतना कम erosion होगा वहाँ पर, right? Let's try to move ahead. The next is what? It is checking the overgrazing. बच्चे, आपको पता है कई बार एनिमल्स को हम एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं ताकि वो लोग ग्रास के ऊपर ग्रेस कर सकें. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ओवरग्रेजिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स बाय एनिमल्स शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड. वी शुड कंट्रोल दिस. Separate grazing grounds should be constructed and fodder crops should be grown in larger quantities to feed to them. हमारे को अपने एनिमल्स को ऐसे ग्रेजिंग के लिए नहीं लेकर जाना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए. उल्टा हमारे को फॉडर क्रॉप्स प्लांट करने चाहिए जिससे कि हमारे को मतलब एनिमल्स को हम लोग फूड प्रोवाइड करवा सके. बच्चे, क्योंकि आपको पता है अगर एनिमल्स ओवरग्रेज कर लेते हैं तो अगेन जो टॉप सॉइल होती है वो लूजन हो जाती है. कैन बी इजिली कैरिड विद विंड, कैन बी इजिली कैरिड विद वाटर, राइट? Next is it is constructing the embankments and the dams. बच्चे, हमारे को embankments और dams construct कर देना चाहिए. बच्चे, in the sides of the rivers अगर आप देखोगे तो कोई भी river है तो उसके side पे ना it is a पक्का construction done. Is that clear? Have you ever seen a dam? अगर आप डैम्स भी देखते हो तो कंस्ट्रक्शंस कितनी थिक और बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स टाइप यहाँ पर स्लोपिंग वे से कंस्ट्रक्शंस करी जाती हैं. वी कॉल देम एम्बैंकमेंट्स. इज दैट क्लियर? एंड दिस ऑल इज डन so that we could prevent the soil erosion. Is that clear? अगर डैम्स के अंदर thin walls होंगी बच्चे, you know it very well, water का flow तो आप लोगों को पता ही है, water is very strong. Is that clear? It can erode anything away with it. तो वो तो एक मिनट में वो दीवारों को तोड़ देगा and can easily sweep away the soil. Is that clear? So बच्चे, you should always remember that we should be having the constructing the embankments and dams. और जब आप embankment और dams को construct करते हो तो you are saving your soil from getting conserved your soil from the soil erosion. ठीक है? Soil erosion by river floods can be avoided by constructing dams. अच्छा बच्चे, soil erosion को हम एक और तरीके से अगर आप dams बना दोगे, is that clear? rivers के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी rivers के ऊपर अगर dams हैं तो automatically the water can be collected there. Is that clear? This reduces the speed of water and saves the soil from erosion. इससे हमारे water की speed भी control हो जाती है and it even saves what? Soil erosion. Now बच्चे, next is a windbreak. What do you understand by a windbreak बच्चे? विंडब्रेक का क्या मतलब होता है? इट्स अ शील्ड. लाइक अगर हमारे को धूप आ रही है तो हम लोग अपने ऊपर एक कवरिंग दे देते हैं जिससे कि वो धूप हमारे तक ना पहुंचे. इन अ सेम मैनर अगर एक बिल्कुल प्लेन फील्ड है, हवा आएगी तो वो तो सॉइल को इरोड कर कर ले जाएगी अपने साथ. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे विंड ब्रेक्स दे देते हैं. फील्ड के सेंटर में या साइड्स पे हम लोग ट्रीज प्लांट कर देते हैं. और ये ट्रीज प्लांट करने का एक मोटिव होता है ताकि जब एयर चले तो वो हवा या विंड्स चलें वो ट्रीज के साथ टकराएं और वो यहाँ पर जो हमारी सॉइल है उसको इरोड कर कर ना ले जाएं. Is that clear? So बच्चे, you should be remembering like the trees or hedges are grown along the edges of the fields which act as a shield against the strong winds. They prevent the soil being blown away and the land is thus saved from soil erosion. और आपकी जो land होगी it is saved from what? Soil erosion. Next is बच्चे terrace forming. Do you know what is terrace forming?
terrace forming is generally done in hills. बच्चे आपको hills पता ना, hills sloping form में होते हैं. तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा slope, then एक flat surface, then slope, then एक flat surface. ये जो flat surface होती है ना, इसको हम लोग एक stairs के form में formulate कर लेते हैं, and we call it terrace farming. Is that clear? बच्चे जब terrace farming होगी और water जब नीचे rush down कर कर आएगा तो water में breaks आ जाएंगी, और वाटर में ब्रेक्स आने के कारण से वाटर इतनी फर्टाइल सॉइल को साथ में इरोड नहीं कर कर जा सकेगा. प्लस इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो, क्योंकि हिली एरियाज में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, वो टेरेस फार्मिंग के बेसिस पे ही ग्रो करते हैं. Let's see, terrace farming is a world widespread method used in hilly areas. In this agriculture practice, the slope is cut into steps. स्लोप को किस में कट कर दिया बच्चे, स्टेप्स में. लाइक आई टोल्ड यू, अ स्लोप अ बिट, देन अ फ्लैट पोर्शन, देन अ स्लोप, देन अ फ्लैट पोर्शन, राइट. दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. Amount of soil lost is also less as soil eroded from one step is deposited onto the next step. बच्चे इसमें सॉइल इरोजन भी कम होगा, क्योंकि जो वाटर जब रश डाउन करता है तो ऊपर वाले स्टेप से जो सॉइल लेकर आता है वो नीचे वाले स्टेप पे आके डिपॉजिट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? सो द टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन. डू रिमेंबर, टेरेस फार्मिंग ऑलवेज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग व्हाट, सॉइल इरोजन. Now बच्चे, let's see, avoid leaving the soil bare. मतलब we should grow our crops whole year round. Is that clear? आपको अपनी लैंड को बैरन नहीं छोड़ना है. बैरन का मतलब खाली नहीं छोड़ना है. हमें कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन को हम खाली छोड़ेंगे बच्चे, वी आर नॉट ग्रोइंग एनीथिंग ऑन द लैंड, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जब बहुत तेज़ हवा चलेगी, अगेन दिस इज इरोडेड. रेनफॉल आएगी, अगेन विद गश ऑफ वाटर हमारी टॉप सॉइल इज इरोडेड. इज दैट क्लियर? तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो विंड्स ब्लो अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम द बेयर ग्राउंड्स. Fields or abandoned areas should not be left bare and can be covered with grass. हमें उनको bare नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको grass से या किसी और चीज़ से हमारे को उनको cover कर देना चाहिए, like कोई और cropping pattern के through. Now the roots of these plants would hold the soil particles together. बच्चे, anything, अगर grass है तो उसके particles भी सॉइल को बहुत होल्ड कर लेती हैं टुगेदर, एंड इवन प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे, एंड दिस हेल्प्स द सॉइल फ्रॉम गेटिंग eroded, right? Let's बच्चे move ahead. So you should be remembering this particular point always, that you should prevent degradation of soil. We should reduce the soil erosion, and we should conserve our soil. Then only the fertility is maintained. So thank you, dear students. I hope you might have understood the whole of a lesson very properly now. Thanks a lot.